हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक हियर विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं, फिर उसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे और फिर उसके नेचर के बारे में जानेंगे। सो व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड अ समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। दैट मीन्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं उससे हमारे बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसकी हमें एक समरी के बारे में पता चलता है, क्योंकि इसमें हम मोस्टली सारे बैलेंसेस लेते हैं। द बैलेंस शीट रिफ्लेक्टिंग द एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। हम बैलेंस शीट बनाते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, दैट इज़ ऑन 31st March. Then on a certain date, an income statement showing the results and operation during a certain period. और उसके साथ हम लोग एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. One thing is there between the balance sheet and the income statement is that balance sheet is prepared for a certain date. एक certain date के ऊपर हम ये बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं जिसमें हमारे सारे बैलेंस शीट शो होते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के. और जो सेकंड दैट इज़ इनकम स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ सर्टन पीरियड. दैट शोज़ कि हम किसी प्रॉपर डेट के लिए नहीं, हम सर्टन पीरियड के लिए बना रहे हैं उसको. दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट. So here we are going to discuss. At the first we say that it shows the financial position of a company at a specific point of time. क्योंकि हम इसको प्रॉपर किसी डेट पे बनाते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है कि हमारी कितनी लाइबिलिटीज़ है, कितनी इक्विटी है. तो उसके हिसाब से हम अपनी पोजीशन को देख सकते हैं कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की. So the second one is the accounting equation describes assets and liabilities. That is, assets is equals to liabilities plus owner's equity, that is shareholders funds. It is just like an equation to solve the numericals. That means जो assets होते हैं हमारे वो किसके इक्वल होते हैं? जब हम liabilities और owners equity को ऐड कर देते हैं तो उसका जो ऐड होता है वो proper assets के इक्वल होता है. That is the equation. We use it in our numericals also. Owners equity means जो शेयर होल्डर्स के फंड्स हैं हमारे पास. द थर्ड वन इज इट इज़ प्रिपेयर बाय टेकिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर्स फंड्स एज ऑन द डेट व्हेन इट इज़ प्रिपेयर्ड. सो जब हम जिस भी डेट को हम इसे प्रिपेयर करते हैं तो उस दिन हम सारे बैलेंसेस को कलेक्ट करते हैं और अपनी बैलेंस शीट में पुट करते हैं. सो on the proper date when we collect the balances of the assets, liabilities and shareholders funds, that will help us to maintaining the balance sheet of our business. So the last point is that our balance sheet shows the opening balance, transaction during the year and the closing balance. So अब हम characteristics के बारे में discuss करेंगे जो कि statement of profit and loss के हैं. Previously we have discussed about the characteristics of balance sheet and now we are going to discuss about the characteristic of profit and loss statement. So the first one is financial performance. In the previous one, we have seen that balance sheet shows the financial position of the business, but profit and loss statement shows the financial performance of the company. So the second one is it is prepared for a past period, that is historical document. Past period means we have already the sources of those transactions, as we have the slips, recorded facts that we are going to collect and record the transactions in our profit and loss statement. So it is a historical document. So the third one is it is prepared for a specific accounting period. It is prepared for a specific accounting period, that means from 1st April to the 31st March. So now we are going to discuss about the nature of financial statements. हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है जो कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की थी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. द फर्स्ट वन इज़ रिकॉर्डेड फैक्ट्स. रिकॉर्डेड फैक्ट्स मीन्स हमारे पास जो एविडेंसेस हैं वो पहले से ही हैं, अब हमें उसमें से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करनी है. सो द टर्म रिकॉर्डेड फैक्ट्स मीन्स रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस दैट वी हैव ऑलरेडी. So for example, amount of cash in hand, cash at balance, debtors, sales, purchases, etc. are recorded facts. So when we perform a sale, we record it in our sources. So now we are going to collect it and record it in our financial statements. The second one is conventions. While preparing the financial statements, some conventions are provided for our accounting process that we are going to follow them.
So the example may be that convention of conservatism. Conservatism means we have to be at the safer side. Means if loss occurs, that we need to estimate previously. So if profits, so we can ignore it. ताकि हम जब भी इसको रिकॉर्ड करते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो हम क्या करें कि जो हमारी परफॉर्मेंस दिखा रहा है एटलीस्ट उससे अच्छी हो, हम लॉस में ना जाएं. दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. Now we are going to discuss the accounting concepts. There are so many concepts given for our accounting process. The example we can take that going concern concept. It is assumed that the business shall continue for a foreseeable future. So कोई भी आता है या कोई भी जाता है, दैट मीन्स किसी कोई न्यू पार्टनर ऐड होता है या कोई पार्टनर छोड़ के जाता है, तो उससे अकाउंटिंग जो कंसेप्ट है वो हमें ये बताते हैं कि इससे हमारे बिज़नेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता. हमारा बिज़नेस जो है वो फ्यूचर में लंबे टाइम तक चलेगा, यही सोच के हमने अपने बिज़नेस को शुरू किया है. सो द नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल जजमेंट्स. पर्सनल जजमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिकॉर्डिंग में. So the judgment can be based that method of depreciation. There are many methods of depreciation that different business firms may opt, but it provides a difficulty in preparing the statements between the two business firms or between the two countries. So personal judgment also plays a very important role as the method of depreciation, like fixed installment method or written down value method. The fifth one is source of financial information. फाइनेंशियल जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमें चाहिए हर एक डिसीज़न लेने के लिए, तो ये हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को शो करने में भी हेल्प करती है.